In this video, we will continue our discussion with the virus structure and its morphology. Moving on, the next characteristic that will help us to study the size and the morphological organization of the virus or the mature virus particle is the high speed sedimentation. The rate of the sedimentation of the virus particle depends upon its size and density and viscosity of the suspending fluid. After that, with the help of the light microscopy, we can also study the morphological and structural organization. The size of the most virions are beyond the limits of the resolution of the light microscope, but the light microscopy has useful application in detecting the virus infected cells. That is the cytopathic effect, or by detecting a fluorescent dye linked to the antibody molecules that have bound to a virus antigen. It means the fluorescence microscopy. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next characteristic and it is high speed sedimentation. So simply the rate of sedimentation of a virus particle depend upon its size and density and viscosity of a suspending fluid. अब देखो, अगर हम वायरस के सेडिमेंट रेट का पता कर लें कि वो कितने देर में और कितनी जल्दी सेडिमेंट हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं उसके साइज के बारे में एक अप्रोक्सीमेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. अब ये बेसिकली जो सेडिमेंट रेट होता है किसी भी वायरस का, वो डिपेंड करता है तीन बातों पे: उसके साइज पे, उसके डेंसिटी पे, और जो सस्पेंडिंग फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी पे. ठीक है, मूविंग ऑन, द लाइट माइक्रोस्कोपी. So simply the size of most virions are beyond the limits of resolution of light microscope, but the light microscope has useful application in detecting the virus infected cells. अब देखो, अब लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से हम मैच्योर वायरस पार्टिकल वायरॉन्स को नहीं देख सकते बिकॉज इट इज बियॉन्ड इट लिमिट्स. लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इसके यूजफुल एप्लीकेशंस भी हैं इन द फील्ड ऑफ वायरोलॉजी, एज इट विल हेल्प यू टू डिटेक्ट द वायरस इन्फेक्टेड सेल. लाइट माइक्रोस्कोपी की मदद से आप ये पता कर सकते हो कि वायरस ने किस सेल को इन्फेक्ट करा है. एज वेल एज यू कैन स्टडी द साइटोपैथिक इफेक्ट. बेसिकली आप क्या करोगे, किसी भी डाई को एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच कर दोगे, वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल किसी वायरस एंटीजन के साथ जाके अटैच होगा. सो यू कैन detect the location of the virus antigen, or you can also determine whether the cells are infected with the virus or not. So these are the applications, very useful applications of light microscopy, help you to judge the morphology and structure of the virus. ठीक है, moving on, the electron microscopy made it possible to study the morphology and size of virus. In 1959, negative staining to the electron microscopy of viruses transformed the knowledge of virus ultrastructure. Negative staining techniques generate the contrast by using the heavy metal containing compounds such as potassium, phosphotungstate and ammonium molybdate. In electron micrograph of the virons, the stain appear dark area around the virons, allowing the overall viral shape and size to be determined. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the electron microscopy. So simply the electron microscopy made it possible to study the morphology and size of viruses. In the year 1959, the negative staining along with the electron microscopy help or transform the knowledge of the viral ultrastructure. देखो, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से किसी भी वायरस की मॉर्फोलॉजी और साइज की स्टडी बहुत आसान थी. सन 1959 में नेगेटिव स्टेनिंग नाम की स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप करा, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के साथ मिलकर उसने वायरल अल्ट्रास्ट्रक्चर की स्टडी को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया. ठीक है, After that, the negative staining techniques generate the contrast by using the heavy metal containing compounds such as potassium phosphotungstate and ammonium molybdate. अब ये नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक में क्या होता था कि बेसिकली वायरस को नेगेटिवली स्टेन करा जाता था. वहां पे क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप करा जाता था बिटवीन द कलर्स. और किसका इस्तेमाल करते थे हम नेगेटिव स्टेनिंग में? हेवी मेटल कंपाउंड्स का, such as potassium phosphotungstate and ammonium molybdate.
After that, in the electron micrographs of the virons, the stain appear the darker area around the virons, allowing the overall viron shape and size to be determined. देखो, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से हम किसी भी वायरस की स्टडी, उसके साइज की स्टडी, उसके मॉर्फोलॉजी की स्टडी बहुत आसानी से कर लेते थे। उसके बाद ईयर 1959 में नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक की मदद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा करी गई सारी मॉर्फोलॉजी और सारी स्ट्रक्चरल स्टडी अबाउट द वायरल, उसको एक नया ही पॉजिटिव ग्लो मिला, इजंट इट? क्योंकि जो नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक थी ना, वो एक कॉन्ट्रास्ट जनरेट करती थी between the colors with the help of heavy metals like potassium, phosphotungstate and ammonium molybdate, जिसकी वजह से जो वायरस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में वायरॉन्स का स्टेन होता था, वो ऐसा दिखता था कि बेसिकली उसके ओवरऑल बाउंड्री पे एक डार्क कलर दिखाई देगा, जिसकी वजह से हम वायरस का जो शेप है और उसका जो साइज है डिटरमाइन कर लेते थे बहुत आसानी से, ठीक है। But this technique has some limitation. It means the structural distortion resulting from the drying. The cryo electron microscopy techniques are more recent. In these, wet specimen is rapidly cooled to a temperature below 160 degrees Celsius, freezing the water as a glass-like material. The image are recorded while the specimen is frozen. The three-dimensional image of the virus particles are obtained. देखो भाई, अभी तक हमने देखा कि 1959 में जो नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक डेवलप हुई थी, उसकी मदद से जो भी हम वायरसेस की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चरल स्टडी करते थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो कितनी इजी हो गई, इजंट इट? बट दिस टेक्निक हैज सम लिमिटेशन. इट मींस द स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द ड्राइंग. अब ये जो टेक्निक थी ना नेगेटिव स्टेनिंग वाली, इसके कुछ लिमिटेशन थी। बेसिकली इस टेक्निक की मदद से हमारी स्टडी तो आसान हो जाती थी, पर यहाँ पे क्या होता था, वायरस का स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन हो जाता था बिकॉज ऑफ द ड्राइंग, ठीक है। After that, the cryo-electron microscopy techniques were developed, which are more recent, and in these techniques, wet specimen is rapidly cooled to a temperature below -160 degrees Celsius, freezing the water as a glass-like material. अब इससे इस लिमिटेशन से इजाद पाने के लिए कायरो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक को डेवलप करा गया और ये हाल फिलहाल में ही करी गई है। इस टेक्निक में क्या होता है, बेसिकली वेट स्पेसिमेन को रैपिडली कूल करा जाता है एट अ टेम्परेचर बिलो -160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है बिल्कुल ग्लास लाइक मटेरियल में फ्रीज हो जाता है एंड द इमेजेस आर रिकॉर्डेड व्हाइल द स्पेसिमेन इज फ्रोजन। और इमेज को हम रिकॉर्ड करते हैं जब हमारा स्पेसिमेन बिल्कुल फ्रोज्ड स्टेट में है। एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन द 3-dimensional images of the virus particle with the help of cryo-electron microscopy. And this is the recent development in the field of virology, which help you to study the morphology and the structure in a very easy and accurate way. Moving on, we will discuss about the X-ray crystallography, which help you to study the virus morphology and structure. So simply, the X-ray crystallography reveals the detailed information about the 3-dimensional structure of the virons. This technique requires the production of a crystal of the viron or the molecules under study. The crystal is placed in a beam of X-ray which are diffracted by the repeating arrangements of the molecule atoms in the crystal. The analysis of the diffraction pattern allows the relative position of these molecule atoms to be determined. You can also go for the nuclear magnetic resonance and the atomic force microscopy. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next technique that will help you to study the morphology and the structure of the virus, and it is X-ray crystallography. Simply it reveals the detailed information about the 3-dimensional structure of the virus. अब ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक की मदद से आप वायरस के 3-dimensional स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हो। बेसिकली दिस टेक्निक रिक्वायर्स द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ द वायरस और ए मॉलिक्यूल अंडर स्टडी। द क्रिस्टल इज देन प्लेस्ड इन अ बीम ऑफ एक्स-रे व्हिच आर डिफ्रेक्टेड बाय द रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड एटम इन द क्रिस्टल्स। अब देखो बेसिकली क्या होता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक में, आप सबसे पहले किसी भी वायरस या वायरल पार्टिकल का एक क्रिस्टल का प्रोडक्शन करोगे, उस क्रिस्टल को एक्सरे बीम में रखोगे विच विल बी डिफ्रेक्टेड बाय द
repeating arrangement of the molecules and the atom in the crystal. Then you will go for the analysis of the diffraction pattern that will allow the relative position of these molecules or atoms to be determined. अब जब क्या करा आपने उस क्रिस्टल को, वायरस के क्रिस्टल को रखा और उससे एक्सरे की बीम पास करवाई, तो देन there will be the diffraction by the arrangement of different molecules and atoms. अब वो जो diffraction pattern आप obtain करोगे उनकी relative positions की study करोगे and then it will help you to determine the morphology, structure and a detailed three-dimensional ultra structure of a virion particle or any particle under the study. ठीक है. After that, you can also go for the nuclear magnetic resonance techniques and atomic forces microscopy techniques. So these all are the structural investigation procedures of virions that will help you to study the morphology and structure of the virus. It started with the capacity to filter, that was known as porosity, and it moved up to the atomic force microscopy. ठीक है. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.